हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से AIPMT 2010 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ डेल्टा U एंड डेल्टा W रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम रेस्पेक्टिवली इन द thermodynamic process, which of the following is true? Delta U is equal to delta W in an adiabatic process. B है delta U is equal to delta W in a isothermal process. Delta U is equal to delta W in a adiabatic process. Delta U is delta W in a isothermal process. The first law of thermodynamics. Delta Q is equal to delta U plus delta W. Delta Q is energy supplied to the system. Delta U increasing in internal energy of the system. Delta W work done by the system on the surrounding. In adiabatic process, no heat can be supplied to the system or from the system. Hence delta Q is equal to 0. इक्वेशन में पुट कर देंगे 0 is equal to for adiabatic process. Zero is equal to delta U plus delta W, और डेल्टा U is equal to minus delta W. In adiabatic process, delta U is equal to minus delta W. The first option is correct option. Next question, if Cp and Cv denote the specific heat per unit mass of an ideal gas of molecular weight m, then Cp minus Cv is equal to R by m square. Cp minus Cv is R. Cp minus Cv is R by m. Cp minus Cv is mR. जो मोलिकुलर relation between molecular Cp, specific heat capacity at constant pressure, and specific heat capacity at coefficient volume, वो होता है Cp minus Cv is equal to gas constant R. Divide by m, divide by molecular weight. M, तो Cp minus Cv by m is equal to R by m. Cp by m minus Cv by m is equal to R by m. ये है Cp, कैपिटल Cp, molecular heat capacity at constant pressure. Cp by m, molecular heat capacity per unit mass at unit pressure, इसको स्मॉल cp से डिनोट कर दें, माइनस सिमिलरली ये कैपिटल Cp है Cv,
मोलिकुलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दिया तो ये पर यूनिट मास स्मॉल cv is equal to R/m. The correct option is Cp minus Cv is equal to R/m. This C is the correct option. Next question है, a monoatomic gas at pressure P1 and volume V1 is compressed adiabatically at 1/8 of its original volume. What is the final pressure of the gas? Option है 64 P1, P1, 16 P1 and 32 P1. Initial pressure is equal to P1, initial volume is equal to V1, final pressure suppose this is P2, final volume is equal to V2, that is given 1/8 of V1. Ratio of Cp by Cv rho is equal to 5/3 for monoatomic gas. For adiabatic process, PV की पावर गामा is constant और P2 V2 की पावर गामा is equal to P1 V1 की पावर गामा. P2 is equal to P1 V1 by V2 की पावर गामा और P1 V1 by V1 by 8, V2 की वैल्यू रख दी गामा, या P1 8 की पावर गामा, P1 8 की पावर गामा की वैल्यू 5/3, P2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 की पावर 5/3, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 की पावर 3 इंटू 5/3, P1 इंटू 2 की पावर 5 या P1 इंटू 32 P1. फाइनल प्रेशर आएगा वो 32 P1 के इक्विवेलेंट होगा. दिस डी इज द करेक्ट ऑप्शन.